Winter in the upper Himalayas. Howling wind and arrested flows. If these frozen mountains are beautiful, they are also cruel to those who live here. हमारा यहाँ 1-1.5 फुट सर्दियों को बर्फ पड़ने की वजह से ये डिपार्टमेंट का लाइन बिछा हुआ है, वो सारे कट जाते हैं ग्लेशियर की वजह से। जून जुलाई तक हमें लाइट की प्रॉब्लम होता है, किसी के घर में पेटामैक्स होता है कि कईयों के मेरे बर के गरीब के पास तो वो भी सुविधा नहीं होता है सर। 3 बजे के बाद दूध सूख जाता है, दूध सूखने के बाद फिर ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद फिर काम नहीं होता सर। तो ऐसा तकलीफ होता है ना, क्या करना। Habitation is sparse. Snow piles and thick ice sheets on roads turn these remote villages into islands, with little choice for food and little access to medical facilities. The winter also brings in long freezing nights and imposes a daily curfew of 15 to 17 hours. With transformers under the snow and the supply of electricity cut off for months, people depend on kerosene and firewood. As the flames die and fumes fill up the closed chambers, the villagers fall asleep after a very early dinner. But even after gallons of fossil fuel and tons of wood go up in smoke, winter remains an energy nightmare. And life chokes in the long nights, confined in virtual gas chambers. ट्रेडिशनल केरोसिन ऑयल लैंप्स हैं वो यूज़ करते हैं, तो इसमें स्मोक बहुत निकलता है और ड्यूरिंग विंटर जो है लोग ज़्यादातर क्लोज्ड रूम में रहते हैं, छोटे से कमरे में क्राउडेड उसमें रहते हैं कंडीशन में। तो ये जो स्मोक है डेफिनेटली जो खासकर स्पेशली छोटे बच्चों में लंग डिजीज़ को जन्म देता है। और क्योंकि सर्दियों में ऑक्सीजन की भी कमी होती है, तो इसलिए ये जो लैंप्स हैं ऑक्सीजन को ज़्यादा बर्न करते हैं, तो ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है उन रूम्स में। But in 2 remote villages of Lahaul-Spiti district in Himachal Pradesh, a technology innovation has offered a way out of this energy black hole. To understand the potential of this happy change, our team visits Lossar and Yoche at different phases of the daunting Himalayan winter. The journeys continue across 2 of the mountain's most challenging passes. Rohtang is frequently blocked between November and February, and Kunzun is declared closed from October to April. If snow piles are not enough, thick sheets of ice deny any sense of control. It is like driving on a wet mirror. Only a minor skid here could take the vehicle down several hundred feet. The extreme conditions and the total isolation during the long winters have lent a stoicism to life in this cold desert, where the key to survival is not in desperate maneuvering, but in endurance. When sheer survival is a daily and seasonal gamble, life seeks unusual intensity in simple faith systems and hearty celebrations.
While Spiti is predominantly Buddhist and a part of Lahaul is influenced by Hinduism, both people draw strength from a host of local deities. And when it comes to celebration, marriages are a happy excuse for week-long song and dance on endlessly flowing beer and barley brew. For all the climatic challenges, most people here are above the poverty line, thanks to apples, seed potatoes and peas harvested in the summer. It is the long, powerless winters that force a rudimentary lifestyle. Education suffers during these dark, extended nights. Even the women, who pride themselves on their knitting skills, can do little under the kerosene lamps. Paradoxically, the answer to meeting energy demands in these remote mountain villages lies in the very elements that make life so tough here. Many households have put up solar plates offered at low cost by the government. But the typically freaky high-altitude weather means the sun is often shrouded for hours or even days together. But when the sun disappears, howling winds take over. So for round-the-clock supply of electricity, both the sun and the wind need to be tapped in tandem. An independent technology research team from a non-government organization, Pragya, has come up with a solution: a solar-wind hybrid system. See, the sun and the wind tend to alternate in the area in the sense that when solar insolation is high, wind velocity is typically low, and when wind velocity is high, solar insolation is typically low. When you have a hybrid system that marries both these, then you ensure that there is continual generation of power. And that also means that you don't have to have a very large storage backup. It is particularly suited for the Himalayan region because you have this the sun and wind alternation in the high altitude Himalayas alone. The cost would vary from about 2 to 2.5 lakhs per kilowatt. And but then if you look at it, one needs to look at it with in a broader perspective and a broader time frame, truly speaking, because this is a system that has a life of about 20 years. This twin energy system was installed at Lossar 4 years back and has changed life for 18 households. Now, another unit is put up about 200 kilometers away at Yoche. Villagers here are excited. Banana. B-A-N-A-N-A. Banana. Kela. Grapes. Not the big. B-I-G. Kate. Donkey. G-O-N. सोलर से बहुत फायदा हो जाएगा जी बच्चों को पढ़ने। अभी तो अभी लाइट चले गए तो फिर अंधेरा ही है नहीं, कभी का महीना 2 महीना नहीं रहते, तो हम उसमें कैंडल या वही जलाते जी। अभी तो इस टावर से बहुत फायदा हो गया हमें, परमानेंट हमें बिजली उपलब्ध हो गई जी। इससे तो बच्चों के लिए फायदा और आम जनता के लिए, हमारे गाँव के वासियों के लिए फायदा है जी। बिजली आएगी तो आसान होता है ना, बड़ा अच्छा होता है ना, वो धूप के साथ आना बिजली, पहले तो अंदर अंदर क्या करना है, बर्फ फेंकना, बर्फ आएगा था वो घास देना, पानी लेना, खाना बनाना, 7 दिन 8 दिन ऐसा होता है ना, हत्ता से और या और आएगा ना, तो क्या करना। बिजली सब खत्म है यहाँ, कोई लेट नहीं है, लैंप से जला के बैठते हैं हम। कुछ मीटिंग होगा
करेगा, कुछ बैठेगा। अब लाइट नहीं तो कैसे अंधेरे में कौन बैठेगा यहाँ। जनवरी फरवरी में मामा बिजली काट जाती हैं तो बच्चे लोग हमारे लंप से पढ़ाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ आना जाना बंद हो जाते हैं सबके लिए। अभी ये पवन चल रहा है तो सर्दी पूरा हमारा मई तक लेट आ जाएगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। Lossar's transformation justifies Yoche's hope. आसानी होगी जब तो पहले तो हमारे कहाँ जी पहले ज़माने में तो बिल्कुल केरोसिन भी नहीं होते जी। तो होते हैं जी जो हमारे सरसों से अपना यहीं से सरसों उगाते हैं जी, उसी से निकाल के तेल से फिर बत्ती जला डाल के फिर छोटा जैसे ये होता है जी कोयले जैसे ना, उसी में से करते हैं पहले। जब छोटे थे हमें जब खुद 5वीं में पढ़ते थे ना जी, उस टाइम तो हमें बस वो लैंप से ही गुजार करते हैं जी पढ़ाई में ना। तो फिर वो लैंप ख़त्म हो जाएगा तो फिर बंद हो गया, फिर अंदर धुआं भी हो जाना जी, बड़ा मुश्किल हो जाता है जी उस टाइम। तो मेरे घर वो वाला है, मैं रात को पढ़ाई करता हूँ और कभी कभी लाइट चला जाता है। फिर इस पंखे की सहायता से आजकल बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि बिना लाइट के हमें उस लैंप से पढ़ना पड़ता है। जब बहुत देर के बाद कमरा धुआं से भर जाता है और हमें पढ़ने में आंखें ख़राब हो जाता है और पढ़ने में मुश्किल होता है। जो सर्दी का रात लंबा होता है, प्लीज़ लोग उससे शॉल बना सकते हैं, क्या कहते हैं पटू बना सकते हैं, गलीचा बना सकते हैं, जुरा बना सकते हैं। 6 बजे जो देते हैं ना, 6 बजे को देते हैं फिर 10-11 बजे तक। It serves the entire village in all its needs. 2 advantages. One is the entire village, including the poorest of the poor who cannot otherwise access such technologies, can get the benefits of this. And the second is that when maintenance is required, again it does not depend on the smaller capacity of an individual household, but the entire village. Along with the hybrid system, another simple, clean technology has helped significantly reduce the dependence on firewood here. While photoelectric plates actively harness solar energy to generate power, passive solar heating uses the same energy to keep the rooms warm and minimizes energy requirement for artificial heating. इस छेद से जो है हीट जो अंदर आते हैं, बाहर जो है शीशे लगे, ये सोलर सिस्टम है। और यहाँ जो हमारे गांव के जो सर्दियों में बिल्ला होते हैं और यहाँ जो है खड्डी खुड्डी और जैसे गलीचा गुलाचा बनाना हो, वो यही बनाने आते हैं। I think passive heating is a very good idea, and now I understand there is a government policy to encourage building of such homes. Lossar and Yoche have found an answer to their energy crisis. But thousands of villages scattered along the highest fringes of the Himalayas still painstakingly stock up kerosene and firewood to get through the long freezing nights. The amount of money which, for instance, goes into either subsidizing transport of fuel wood to these areas or in afforestation or in other such programs which have not so far really yielded much. And with each passing winter, thin patches of mountain green get thinner still, and lungs gather lantern soot inside closed, dimly lit rooms. For these prisoners of the snow, the solar-wind hybrid system is not just an energy solution, but the promise of life. जो दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना जो रिमोट विलेज में इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, तो यहाँ पे विंडी कंडीशंस हैं, तो उस सूरत में ये जो कन्वेंशनल विंड मिल्स वगैरह हैं बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं रिमोट विलेजेस में इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए। और लाइटिंग अगर प्रॉपर हो जाए, तो अगर ये लैंप्स अगर यूज़ ना हो तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्रभाव दे सकते हैं। Sometimes nature speaks to us in riddles. If nature tests us, nature also leaves answers hidden in her elements. The solar-wind hybrid technology has cracked one such puzzle. If adopted all along the upper Himalayas, this twin energy solution can save and make thousands of lives better and ensure a cleaner,
greener tomorrow.